Or Casuarina Tree is an autobiographical poem. While living abroad, she is pining for the scenes of her native land and reliving the memories of childhood. The poet continues with a description of how strong the image of the tree is, even when in lands far away. Even in France and Italy, where the poet studied, she can hear the trees lament. Stanza third ended with the sentence in that it is the trees lament that happily to the unknown land may reach. Unknown yet well known to the eye of faith. Ah, I have heard that wail far, far away. Wail refers to lamentation of tree. Poet says that I have heard that lamentation far, far away in distant lands. यानी बहुत दूर तक उसका जो वेल है, जो लेमेंटेशन है, ट्री का जो विलाप है, वो सुनाई दे रहा है. बाय मैनी ए शेल्टर्ड वे, और बहुत से शेल्टर्ड वे के पास में. व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर है, जब सी जो है, समुद्री देवता जो है, वो अपनी केव में सो जाते हैं. एंड द वेव जेंटली किस द क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस एंड इटली, और सी वेव जो है वो जेंटली टच करती है सी शोर को, किनारे को, फ्रांस और इटली की. फ्रॉम दिस लाइन वी कम टू नो दैट शी इज़ टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंट लैंड दैट इज़ ऑफ फ्रांस और इटली. बीनीथ द मून व्हेन अर्थ ले ट्रेंस्ड इन ए ड्रीमलेस सून. मून के नीचे, मून इज एसोसिएटेड विद सी. वी नो द कनेक्शन बिटवीन सी एंड मून. बीनीथ द मून व्हेन अर्थ ले ट्रेंस्ड इन ड्रीमलेस मून, यानी जब अर्थ सो जाती है एक गहरी नींद में. ड्रीमलेस मून मीन्स बहुत गहरी नींद. एंड एवरी टाइम द म्यूज़िक रोज, और ऐसे समय में हर बार एक म्यूज़िक अराइज होता है. बिफोर माइन इनर विजन ए रोज ए फॉर्म सबलाइन, और मेरे आंतरिक विजन में एक फॉर्म, एक पिक्चर, एक इमेज क्रिएट होती है, अराइज होती है. एंड व्हाट इज़ दैट इमेज? दाई फॉर्म. ओ ट्री, as in my happy prime I saw thee in my own love native time. और ये जो फॉर्म इसके इनर विजन में जो पोइट को जो फॉर्म दिखाई देती है, वो किसकी फॉर्म है? ट्री के, कैजुआरिना ट्री की. और कैसी फॉर्म? एज इन माई हैप्पी प्राइम. हैप्पी प्राइम मीन्स हैप्पी चाइल्डहुड, कि जैसे मैंने अपने हैप्पी चाइल्डहुड में तुम्हारी फॉर्म को देखा है, तुम्हारी इमेज को. आई सॉ दी, आई सॉ यू इन माई ओन लव नेटिव क्लाइम, यानी अपने खुद के घर में मैंने जो तुम्हें बचपन में देखा है, वैसे ही फॉर्म मेरे इनर विजन में अपीयर होती है, मुझे दिखाई देती है. द ट्री इज़ डियर टू द पोएट बिकॉज इट इज़ द सोलो बॉन्ड बिटवीन द पोएट्स पास्ट एंड प्रेजेंट. When she recalls it, a chain of pleasant and poignant memories occur to her mind, and again she tastes the flavor of her childhood. In her imagination, she is again transported to the golden age and hears the same cries, laughter, and noise of her sweet departed playmates. This tree reminds of her siblings who used to play with her under it. Torudat has brought out the theme of nature as something that shares feeling with humans, which lightens the burden of the heart. तो यहाँ हमने देखा जो नेचर है वो सिंपैथेटिक है, वो ह्यूमन बींग्स की जो फीलिंग्स है, यानी तोरुदत की जो फीलिंग है उसको शेयर कर रही है, जिससे कि हार्ट का जो बर्डन है, जो टेंशन है पोएट के माइंड में, वो क्या हो जाती है? लाइटन, यानी कम हो जाती है. The poetess admits feeling by how she was deeply touched and stirred by the memory of the tree when she was away in some foreign country of France or Italy. इस स्टेंजा में पोएटिस ने ये बताया है कि कैसे इस ट्री की जो याद है उसे डीपली टच करती है जब वो किसी फॉरेन कंट्री में, फ्रांस और इटली में कहीं रह रही होती है तो भी. Personification is used in this stanza. In the lines, when slumbered in his cave the water wraith, here sea is personified. कि जो समुद्र देवता है, सी जो है वो अपनी केव में सोए हुए हैं. वेव जेंटली किस द क्लासिक शोर, लहरें जो है वो जेंटली टच कर रही हैं, किस कर रही हैं. वेव्स आर personified here. When earth lay tranced in dreamless swoon, earth is
sleeping soundly. So here earth is personified. Thy form, O tree, as in my happy prime. So here tree is personified. Eye of faith. Faith is personified. Archaic words are used in this stanza. Thy, thee, etc. Apostrophe. Apostrophe is a figure of speech in which we address something directly, that is absent. Thy form, O tree, as in my happy prime. Here, poetess is addressing the tree directly. So here, poetess is using apostrophe. Symbolism is used in the poem. The tree symbolizes the poet's feeling. Her childhood is associated with the casuarina tree, which was standing in her garden. She grows up and goes away, but tree remains in her memories always. Now stanza 5. It begins as therefore. In first four stanzas, what we have seen, poetess has described about the casuarina tree, its danger, why she is so much associated with the tree, why she is having a close relationship with the tree. She has told about all these things. Now what she decides, she says, therefore I fain would consecrately unto thy honor, tree, beloved of those who now in blessed sleep for a repose, dearer than life to me, alas, were they. Mayst thou be numbered when my days are done with deathless trees, like those in Borrowdale, under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope, and death, the skeleton, and time the shadow, and though weak the verse, that would thy beauty fain, O fain rehearse, may love defend thee from oblivion's curse. Here, poetess proposes to dedicate a song in the honor of her beloved tree, so much in association with her dear mates, now no more. She believes that this will remain along with other trees as it is now, even after her own death. She has also a firm conviction that her poem, written in praise of the casuarina tree, will ever keep it alive in the memory of the world. She immortalizes the tree through this poem, like how Wordsworth sanctified the yew trees of Borrowdale Valley. She says, may love defend thee from oblivion's curse. Oblivion means forgetfulness. She is expressing her wish that love shield her tree against the curse of oblivion. The poet wishes to consecrate the tree's memory and importance for the sake of those who are now dead, and looks ahead to her own death, hoping that the tree be spared obscurity. She says, therefore, I fain would consecrately, that fain means happily, consecrate means compose. Therefore, I will happily compose a poem unto thy honor, in your honor, O tree, beloved of those, who is beloved of those, तुम उन लोगों के प्यारे हो, who now bless sleep for a repose. A means always. Who now in blessed sleep for always repose. Who has slept for always. Who are no more now. यानी तुम उन लोगों के प्यारे हो जो हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं. Dearer than life to me. वो लोग मुझे लाइफ से भी ज़्यादा प्यारे हैं. Alas were they. काश वो आज होते. तो here they refers to Aru and Abju, Torudat's siblings. Mayst thou be numbered when my days are done with deathless trees. Poetess says that thou means you should be numbered. तुम्हें काउंट किया जाना चाहिए. Casuarina tree should be counted when my days are done, when I will die. यानी मेरी डेथ के बाद भी Casuarina tree जो है इसको काउंट किया जाना चाहिए. किसके साथ? With deathless trees, यानी immortal trees की गिनती जब हो तो उनमें इसे काउंट किया जाए. Like those in Borrowdale, under whose awful branches lingered pale fear, trembling hope, and death the skeleton, and time the shadow. So poetess says कि जैसे कि बोरोडेल वैली के जो यू प्लांट्स थे
जिनकी आर्टफुल ब्रांचेस में लिंगर्ड मीन्स यूज टू लिव लाइक अ स्पिरिट, एक आत्मा की तरह रहा करते थे, फियर, ट्रेम्बलिंग, होप एंड डेथ एंड टाइम द शेडो. The line fear, trembling, hope and death, the skeleton and time, the shadow is taken from Wordsworth poem. That's why it is written in inverted commas. So poet wants to say, जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने बोरोडेल वैली के जो ट्रीज़ हैं, यू ट्रीज़ हैं, उनको इमॉर्टलाइज किया अपनी पोएम में, बिल्कुल वैसे ही मैं चाहती हूँ कि ये जो कैज़राना ट्री है वो भी इमॉर्टल रहे, अमर रहे, डेथलेस ट्रीज़ में काउंट किया जाए after my death when my days are done. And though weak the verse, in final lines she says that my verse, my poem may be weak. हो सकता है कि मेरी ये कविता जो है वो वीक हो. That would thy beauty feign, O failures, जो कि तुम्हारी ब्यूटी को बता रही है, तुम्हारी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है. But what I wish may love defend thee from oblivion's curse. लेकिन मेरी इच्छा है मेरा जो लव है वो तुम्हें ऑब्लिवियंस के कर्ज से यानी फॉरगेटफुलनेस से बचाए. इस कविता के द्वारा तुम हमेशा हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाओ. सो हियर द पोएट वांट टू इमॉर्टलाइज द ट्री बाय हर पोएम. Allusion is used in this stanza. Allusion refers to references from any worldly event. Here literary allusion is used when Toru Dutt places Casuarina tree beside Wordsworth yew trees. In the line, fear, trembling, hope and death, the skeleton and time, the shadow. Personification is also used here. Fear, hope, death, time, all these things are personified. Archaic words are also used in this stanza. Toru Dutt knows that like her brother and sister, she too will have to bid farewell to this world, and her only wish is that the tree should live forever and be numbered amongst the deathless trees. The poem is a meeting point for the past and the present, for time and eternity. This is the theme symbolically presented in another words. It is an admirable blend of local touches and literary reminiscences or objective description of the actual tree and the charm of association with the childhood of Toru Dutt. So this is the poem or Casuarina tree. The poem has been divided into 5 stanzas, each made of 11 lines. The rhyme scheme is ABBA, CDDC, EEE. The sound system creates a very line rhythm through consonants and assonance. There are many phrases used in the poem which make the poem musical. So we can say our Casuarina tree is a superb piece of writing and gives us a taste of what Toru might have done had not the race of her life been so quickly run. Thank you.